Good afternoon, students. Students, today we will start with the new chapter, that is how do organisms they reproduce. So, before starting this chapter, we should know that what is in actual meaning of word reproduce, or what is the meaning of word reproduction. So, reproduction, it is basically a process in which an individual give birth to another young one of its own kind. Like we can take example that human being, it will give birth to a human only. Okay, so an individual will give birth to the young one of its own kind. Like cat will give birth to the cat, human will give birth to the human. So if we scientifically define the process of reproduction, it is the biological process. Why we are calling it as biological process? Because the different kind of life processes, they are interlinked with this process reproduction. Okay, so it is a biological process in which one living individual is giving birth to another living individual of its own kind. So now question arises that what is the need of reproduction? ज़रूरत क्या है reproduction की? Okay, as we all know that reproduction, it requires the lots of energy. Okay, lots of energy is wasted in this process. So what is the requirement of reproduction? Why it is so essential for the living organisms? So here comes the importance of reproduction, that to maintain the continuity of life. The first one is to maintain the continuity of life. Firstly, the life exists on the earth. Okay, what happens? The life started on the earth and that life flourishes on the earth. वो life flourish कैसे हुई earth पे? By the help of reproduction. अगर उस टाइम पे reproduction ना होती तो जो भी इंडिविजुअल सबसे पहले अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था वही होता और उसकी डेथ के साथ फिर लाइफ खत्म हो जाती. तो आज तक अभी तक लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर रही है? दैट इज बाय द हेल्प ऑफ reproduction. Next one is by the perpetuation of the species. Perpetuation of species means that reproduction, it is an answer to death. अगर एक इंडिविजुअल का डेथ हो जाता है तो उसके जो नंबर है, उसका जो इंडिविजुअलिटी है वो तो ख़त्म हो गई. तो एक स्पीशीज़ है, लेट्स टेक द एग्जांपल कि सपोज करो आप एक टाइगर देख रहे हो, आपके पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक ही टाइगर होता. ठीक है, वो टाइगर, उसकी अगर डेथ हो जाती तो हमने तो सपोज करो चलो देख लिया वो टाइगर, क्या हमारी नेक्स्ट जनरेशन वो टाइगर देख पाती? नहीं देख पाती. तो टाइगर्स का नंबर कैसे मेंटेन हुआ? हम भी टाइगर्स को देखते हैं आज के टाइम में, इवन नेक्स्ट जनरेशन्स भी टाइगर्स को देख सकती हैं. सो दैट इज मेंटेनिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. दैट इज मेंटेनिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. दैट इज अगेन डन बाय द रिप्रोडक्शन. यानी एक स्पीशीज है, उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो भी रिप्रोडक्शन के थ्रू मेंटेन होती है. मैंने एग्जाम्पल लिया टाइगर का. नेक्स्ट, इट मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ पॉपुलेशन. Organization means a structure is maintained by in the population, that by maintaining that these people, the people who can reproduce, they are the elder people. Okay, they are the adults, and with who cannot reproduce, they are young or infants. तो सबकी अपनी अपनी categorization है, that is also based on the capability to reproduce. So population is divided into various zones based on the reproductive capabilities. Okay, then comes the reproduction. It introduce variations. So what are these variations? Variations, they are mainly the kind of differences among the individuals of same population. Clear? Like we can see that if we see the skin color, there are various skin colors. So that is the variation. Clear? So transfer of the useful variation. Reproduction, it helps in the transfer of the useful variation from one generation to the next generation.
So if question comes that what is the importance of reproduction, you may write all the points to explain the importance of reproduction. Now we will study about the basic features of reproduction, that what are the basic features, what are the basic steps of reproduction. Okay, the first one is replication of DNA. Let's take the example, like this cell is there, it is having nucleus, it is having cytoplasm. Now this cell has to reproduce itself. Okay, reproduce means it has to form its daughter cells. Clear? So this is how the cell is being reproduced. So firstly, what will happen, its nucleus that is containing the DNA, that DNA will get replicate. Replicate means DNA की copy बनेगी. DNA will form exact copy of itself. So now intermediate stage will come, single cell will be there and there will be two nucleus, two copies of the DNA. Now, is that now a different cell? No. Is it now two different cells? No, it is a single cell. बेशक इसके पास दो न्यूक्लियस आ गए हैं, दो डीएनए आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये अलग अलग सेल में डिवाइड नहीं हुआ, रिप्रोड्यूस नहीं हुआ, एक यंग वन नहीं बना, ये तो अभी ओल्ड सेल ही है, पेरेंट सेल ही है. तो यहाँ पर अब सबसे पहले इसके पास क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा. Various cell apparatus, it will include the spindle fibers, microtubules, it will include all other cell organelles like mitochondria, etc. Now, as both of the nucleus, both of the DNA, they will get surrounded by all the cell apparatus. Now, finally, what will happen? Now, the two cells, they will divide. Okay, and finally we will get the formation of reproductive structures can also be there, like in you will study in some of the multicellular organisms, many of the reproductive structures they are formed which get dispatched from the parent body. Okay, so यहाँ पर cell division के बाद two new cells they are formed. Now the individual, it is become a new individual. Okay, so at last what will happen, formation of new individual will take place, like here two new individuals will formed from a single parent. Okay, so this is the basic feature of the reproduction, that firstly DNA will form its copy, then all the cell apparatus will be reformed with both the DNAs, and finally cell will divide. Okay, this is the process in unicellular organism. Now if we talk about the multicellular organism, what happened, multicellular organisms, they have some specialized reproductive structure. Okay, so that reproductive structure helps in the process of reproduction. So दोनों के end में what will happen, the new individual will be formed. Now, do organisms they create exact copies of themselves? क्या जो एक ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या वो अपनी जैसी सेम टू सेम कॉपी बना सकता है? सो एवरी ऑर्गेनिज्म इट हैज़ इट्स बेसिक particular body design. Like if we talk about the human beings, we have a particular body design, that we are having one head, two arms, two legs. So this body pattern, it remains same in all of us. Okay, if we are talking about the humans, so all of the human beings, they are having the same body design. But then again, we are individuals, we are different from other individuals. How it so? So the body design, it is governed by the blueprint, जिसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, डीएनए बनता है. ये डीएनए है विच इज एक्टिंग एज अ ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट मीन्स जिसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी का बॉडी डिजाइन बनेगा. इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, cell is having nucleus which is including chromosome is having DNA, and this DNA is what which is encoding the genes which are producing the proteins, and this DNA, it is moving from one generation to the next generation. So DNA is the hereditary material, okay, which just transfer the characters from one generation to the
next generation. For this, every time cell is to divide. Okay, so what happened? The parent DNA, it will replicate, it will copy its DNA. Okay, but now not only a single DNA can create a life, it has to be combined with the cell apparatus, only then that cell can become live. Okay, now during replication, sometimes what happen, the error comes, same to same DNA cannot get copied. So DNA replication, at that process, what happened, there comes the variation, there comes some kind of changes. So these variations, they are very important. They lead to adaptation, and further adaptation leads to evolution, that is formation of the new species. This DNA is the molecule which will finally code for the proteins, and these proteins, they form the structure. So अब अगर यहीं पर DNA में ही change आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन में भी चेंज आएगा, ऑटोमेटिकली जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था वो भी चेंज होगा. लेट्स टेक द एग्जांपल, वी आर हैविंग टू डीएनएज, ए डीएनए एंड बी डीएनए. ए डीएनए का स्ट्रक्चर ए ए टी है, बी डीएनए का स्ट्रक्चर है ए टी ए. ओके, नाउ अब क्या हुआ, यहाँ पर वेरिएशन हो गई. एक में वेरिएशन, पहले दोनों ए टी थे. ओके, ये मान लेते हैं पहले दोनों ए टी थे. ओके, ए बी और बी बी. ओके, ये प्रोटीन बना रहे थे, प्रोटीन नंबर 1, प्रोटीन नंबर 1. अब क्या हुआ, बी डीएनए की जब कॉपी हुई तो बी डीएनए में वेरिएशन आ गई, और बी डीएनए में क्या बन गया, यहाँ पर बी डीएनए में वेरिएशन क्या आई, यहाँ पर हमारे पास बन गया ए टी ए. अब ये चेंज हो गया, ए टी की जगह ए टी ए आ गया, वेरिएशन हो गई. अब प्रोटीन नंबर 1 की जगह प्रोटीन नंबर क्या बनेगा, 2 बनेगा. सो हमने देखा, अगर हम डीएनए में चेंज करते हैं तो प्रोटीन चेंज होगी. अब ये प्रोटीन अगर सपोज करो आईज बना रही थी, तो ये नंबर 2 क्या बनाएगी, इसका फंक्शन अब आईज के रिगार्डिंग नहीं होगा, इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट, how variation it leads to formation of new kind of structures. Okay, so we can't say that all organisms, they can create an exact copy of themselves. Okay, now what is the importance of variation? अब variation की क्या importance है? वेरिएशन इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंडिविजुअलिटी. अब हमने पढ़ा कि सभी का बॉडी डिज़ाइन सेम रहता है. ओके, अब अगर हम सभी का बॉडी डिज़ाइन सेम होता तो हमें कैसे पता लगता कि ये राम है, ये श्याम है. ओके, तो सबको अलग अलग कौन बना रहा है, वेरिएशन बना रही है. वेरिएशन की वजह से बेशक हमारा बॉडी डिज़ाइन सेम है, लेकिन फिर भी हमारी डीएनए की कॉपिंग अलग अलग हो रही है, जिसकी वजह से हम दिखने में अलग अलग हैं. ओके, वी कैन मेंटेन आवर इंडिविजुअलिटी. नाउ वेरिएशन हेल्प्स इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब हमारे नेचर में जो ऑर्गेनिज्म वेरिएशन शो करते हैं वो अपने आप को नेचर में अडेप्ट कर लेते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स वेरिएशन नहीं शो करते वो अपने आप को इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाते. तो जो नेचर है, नेचर हमेशा किसको सिलेक्ट करता है, जो अपने आप को अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लेता है उसको सिलेक्ट करता है, और जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता उसको नेचर से बाहर कर देता है. ओके, सो वेरिएशन इट हेल्प्स इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इट हेल्प्स इन स्ट्रगल फॉर existence. Okay, so next one is pre-adaptation. Pre-adaptation means पहले ही अडेप्ट हो जाना किसी चीज में. So variation which remain unexpressed in the individual till there are certain drastic changes in the environment. यानी कुछ ऐसे changes हो जाते हैं, variations कुछ ऐसे changes लेकर आ जाती हैं जो अपने आप को अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपने आप को अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती, जब तक इन्वायरमेंट में कोई बहुत बड़ा चेंज ना आए. वी हैव टेकन द एग्जाम्पल. नाउ
सच चेंजेस जो हैं, ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस हैं, वो ज़्यादातर इंडिविजुअल्स को ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। सिर्फ वही इंडिविजुअल उस ड्रास्टिक चेंज के बाद सरवाइव कर सकते हैं जिन इंडिविजुअल्स में क्या होती है, प्री अडेप्टेशन होती है। यानी उनकी बॉडी में अडेप्टेशन तो आ गई थी, लेकिन उन्होंने अभी अपने अंदर छुपा कर रखी हुई थी वो अडेप्टेशन। जब एक्चुअल में उनको उस अडेप्टेशन की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने शो कर दिया। लेट्स टेक द एग्जाम्पल। अब we all know that nowadays global warming is increasing. The temperature of earth is continuously rising high. Okay, in the temperate region also. अब उस टेम्परेट रीजन में एक वाटर बॉडी में बैक्टीरियाज रहते थे। वो बैक्टीरियाज अडेप्टेड थे कोल्ड वाटर में रहने के लिए। ओके, एकदम से वाटर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, तो जो कोल्ड इन्वायरमेंट में अडेप्टेड बैक्टीरियाज थे, अब वो तो ठंड में ही रह सकते थे, गर्मी में रह ही नहीं सकते थे, उन सब की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी थे जो क्या होते थे, जो सर्दी में भी रह सकते थे, कोल्ड टेम्परेचर में भी रह सकते थे और हॉट टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। यानी उनमें ये जो हॉट टेम्परेचर में रहने वाली कैपेबिलिटी थी उनके अंदर तभी, लेकिन उनके इन्वायरमेंट में पहले कोल्ड इन्वायरमेंट था तो वो वहाँ पर ईजिली रह रहे थे। अब ड्रास्टिक चेंज हुआ, टेम्परेचर हाई हो गया, हॉट हो गया, तो अब ये बैक्टीरियाज हैं जिनमें प्री अडेप्टेशंस थी, they will have ability to tolerate the high temperature also. तो ऐसे बैक्टीरियाज क्या हो जाएंगे, they will remain alive. Okay, they will not die because उनमें पहले ही वेरिएशन हो चुकी थी इन द फॉर्म ऑफ प्री अडेप्टेशन। जैसे ही प्री अडेप्टेशन को अपना इफेक्ट शो करने का टाइम मिला, उसने अपना पॉजिटिव इफेक्ट शो किया और वो इंडिविजुअल्स ग्रो कर सके। ओके, नाउ the farmers, animal breeders, they are also using the variation for improving the quality of their crop, of their animal. You have heard about the high yielding varieties. Okay, so how the high yielding varieties they are formed, just by introducing the variation to the old varieties. Clear? Then we have already studied that variation, it forms the basis of evolution. Evolution means formation of new species. ओके, सो एक नए तरह के स्पीशीज बनने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वेरिएशन की। जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा, तब तक एक नया स्पीशीज फॉर्म नहीं होगा। तो नए स्पीशीज को स्पीशिएशन होने के लिए वी रिक्वायर वेरिएशन एंड स्पीशिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। ओके, सो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, that what is the importance of variation. So you have to explain all these points in that topic. Clear? Now